Yes, sir, it is. Okay, it is visible, right? Forms. Okay. So, एक minute, just give me a minute. Okay. So guys, do you have any idea what is actually forms? Forms होते क्या है? Forms से हमारी समझ क्या है? Or in that examination, how a question from forms could be asked? Do you have any idea? Have you heard about this word earlier anytime? No? Ankit, Swimi, and whosoever is looking at this video, have you heard about Yes, this? sir. You heard about this word, forms? Yes, sir. Okay, so can you elaborate what does it actually mean? What is your understanding of forms? Uh, Hello? f- Yeah. uh, a form is similar to shape. Okay. Similar, or Yeah, are they same, or are they different? mm, similar. Hello. Okay. Yes, Ankit. They have width, sir. They have मतलब width width चौड़ाई भी होती है उसमें, सिर्फ 2D नहीं of होते, 3D होते हैं। हाँ, 3D होते हैं, तो शेप क्या होता है? शेप 2D हो सकता है सर। Okay. Okay. ठीक है. All right. So today's conversation is about the forms in not only in the physical sense but also in the tangible. Physical means tangible and intangible sense, right? Right. So if I am what I'm sharing on the screen, what is the difference between both the drawings? What as an outline I am talking. How can this circle, something which is similar to circle, look different as an sphere? अंतर क्या आ रहा है इन दोनों में? Contour lines and shadow. Contour lines and shadow, very good. तो बेसिकली है ये 2D पे प्रेजेंटेशन, बट व्हाट इज फॉर्म्स इज बेसिकली visual presentation of any 3D form, any 3D product or any 3D element. तो basically what happens is जो स्क्रीन है या जो पेपर है जिसपे हम डेट एग्जामिनेशन को अपीयर होने वाले हैं, एक्चुअली व्हाट वी आर ड्राइंग देयर, बी इट रेशियो सॉरी पर्सपेक्टिव थिंग्स, बी इट फॉर्म्स, बी इट शेप्स, तो बेसिकली हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो सब 2D में हो रहा है, एक लेंथ और एक बिड्थ में, बिकॉज पेपर में 3 डायमेंशन नहीं होता। इवन कंप्यूटर स्क्रीन में भी वो हमको 3 डायमेंशन जैसा दिखता है बट एक्चुअली वो होता नहीं है। सो इट्स अ विजुअल परसेप्शन। So that visual perception ki understanding we bring together to this 2D sheet, and through contour lines or some supporting lines, we try to bring out a different meaning from a similar shape. जैसे यहाँ पे left side पे it's simply a circle, but once what Swimi said rightly, once we add the contour lines here, so it becomes immediately resemble to a sphere जैसा लगने लगता है, ball के जैसा दिखने लगता है। And to add further to this thing, this becomes there appears to be a shadow, all right? तो शेडो जो होता है वो कंफर्मेशन दे देता है कि दिस थिंग हैज वेट और सर्टेन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम है तो वेट होगा ऐसा परसीव होता है, बट एक्चुअली में ये सर्किल कभी मूव करने वाला नहीं है, ये इस स्क्रीन पे उस पेपर पे इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी कांस्टेंट एट द सेम प्लेस, कभी मूव नहीं करेगा। सो बेसिकली फॉर्म्स क्या है, तो वो जो 3D ऑब्जेक्ट है, 3D एलिमेंट्स है, उनका उनका विजुअल परसेप्शन कैसा हम क्रिएट कर रहे हैं using sketching as a medium is basically the understanding of the forms. All right. So if we move further, and what you were saying, Swimi, इसमें थोड़ा difference है ना? Shape is basically an external border. मतलब basically मैं कैसे बोलूँ, किसी चीज का एक outline जैसा होता है जो कि 2 डायमेंशनल होता है, मोस्टली इट्स 2 डायमेंशनल। इसकी एक लेंथ होगी, एक विड्थ होती है ना? इट कैन बी ऑर्गेनिक सच एज नेचुरल स्ट्रक्चर्स, इट कैन बी ज्योमेट्रिक सच एज सर्किल, स्क्वायर्स और ट्रायंगुलर फॉर्म, कुछ भी हो सकता है। और
In contrary to that, forms mean something which is bodily and in three dimensional form. मतलब थ्री डी में होता है ना. It includes certain volume, depth and a sense of mass. अब mass का सेंस देखो कहाँ आता है, जब हम शेडो ऐड कर देते हैं उसमें. ऑलराइट. सो जिस चीज का अपना कुछ वेट होगा, कोई वॉल्यूम होगा. सपोज हमारा ह्यूमन बॉडी है, हमारा एक वेट है, एक वॉल्यूम है. एंड व्हेन सन पुट्स लाइट ओवर अस और एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, वी आर बॉडी टेंड्स टू कास्ट अ शैडो. शैडो क्रिएट करते हैं. ऑलराइट. सो दैट शैडो गिव्स अ परसेप्शन ऑफ वॉल्यूम और वेट, विजुअल वेट. ठीक है. इवन दो अ बलून, इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बलून, वो देखने में कि देखो कितना ऐसे अगर पकड़ो और अगर आप उसे सीमेंट से या कुछ ऐसे कोट कर दो एंड फर्स्ट टाइम में आप उसे स्ट्रेटेजिकली रखो, तो somebody कैन गेट फूल. इट कुड बी वेरी वेरी हैवी. क्योंकि इसका विजुअल जो विजुअल है, यानी कि जो हमारा प्राइमरी इंटरेक्शन होता है किसी भी चीज से या आसपास की वर्ल्ड से, वो विजुअल फर्स्ट होता है. बाद में या तो वो पर्सन बोलता है या उसके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं या उस ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करते हैं या उसको उठाने की कोशिश करते हैं, उसको रखने की कोशिश करते हैं. तो देन वी कम टू नो कि ओके, जो परसीव हो रहा था वो अलग था, जो दिख रहा है वो अलग है, या जो है एक्चुअल में. सो सपोज व्हाई आई एम सेइंग कि सपोज एक तुमने बलून लिया, बलून के ऊपर आपने सीमेंट की एक लेयरिंग कर दी एंड द सीमेंट लेयरिंग में सीम की ये इसमें एक वेट है, बट एक्चुअली वो बलून में ना भी हो, तो दैट बेसिकली अपीयर्स. तो वो थ्री डी में जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो वो फॉर्म्स होते हैं. ओके. एंड इसको इसको दिखाने के लिए, टू डी और थ्री डी को डिफरेंशिएट करने के लिए ना, जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली, उनको दैट वी कॉल देम contour lines. Contour lines are the supporting structures which I have tried to show simply here in this thing. Okay. Then comes another important topic which is silhouette. Silhouette क्या होता है? So silhouette में what you see here, क्या देखने में क्या लग रहा है? What it is? A table. कैसे पहचाना? How you come to know it's a table? A silhouette. करेक्ट. तो बेसिकली हम चीजों को ना, सो एक डिजाइन में कहावत है या डिजाइन में एक अंडरस्टैंडिंग है कि इफ यू हैव टू मेक अ प्रोडक्ट, इफ यू आर मेकिंग प्रोपोर्शनेटली राइट, कोई भी चीज को अगर मैं प्रोपोर्शनेटली सही बना रहा हूँ या देखने में वो सही है, यानी कि प्रोपोर्शंस में, यानी कि एक ह्यूमन ह्यूमन क्यों लगेगा, वो एलियन जैसा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उसके जो बॉडी में प्रोपोर्शंस है ना, वो लगभग सेम होते हैं. मतलब सेम इन द सेंस जो हमारी बॉडी में है. बट आप अपने एलियंस भी देखो अपनी फिल्म में, वो हमारे जैसे दिखते हैं. वी कैन नॉट मूव वेरी मच अवे फ्रॉम द रियलिटी. सो प्राइमरी अगर आपका डिजाइन अच्छा है और प्रोपोर्शन सही है, तो प्रोपोर्शन का सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट होता है कि दैट यू कलर द होल ऑब्जेक्ट विद ब्लैक. बेसिकली उसका सिलुएट जैसा कुछ बना दो. एंड अगर वो सामने वाला उस ऑब्जेक्ट को पहचान पा रहा है, देन यू हैव डन योर जस्टिस विद द proportions. So silhouette is an important understanding from the point of view of the data examination. So silhouette is a vital element, and a clear and crisp silhouette is capable enough to provide the information about the meaning, emotion, proportion, and other necessary details to identify an object. So keep this word in mind. Okay. Okay. Then what you can see in this figure is basically, जब पहली बार में कोई बंदा इसको देखेगा तो इसमें दो चीजें उसको दिख सकती हैं. So what you guys can see in it is basically, if you look carefully, और ऐसे क्वेश्चंस हमारे एनआईडी के एग्जामिनेशंस में आते हैं. A white paint looks like a table and black paint shows human faces. ह्यूमन फेसेस. बट अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है इन एनआईडी एग्जामिनेशन और डेट एग्जामिनेशन, दैट दे पुट letters, a sequence of letters in such a way that unless you look carefully, it will all look like something unnoticeable. But when you look on the differentiate between the positive and the negative, then you will see clearly कि see career 360 is written. सो अब अगर मैं करियर 360 में से ये ब्लू बैकग्राउंड को हटा दूं, तो आप व्हाइट इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि उसके पीछे एक बैकग्राउंड है. सिमिलरली जिसे हम लोग नेगेटिव स्पेस और पॉजिटिव स्पेस बोलते हैं. सो इन माय केस जो नेगेटिव स्पेस है दैट इज द ब्लू स्पेस, बट जो व्हाइट दिख रहा है ना,
वो अपना पॉजिटिव स्पेस है। एंड दिस अंडरस्टैंडिंग एंड दिस प्लेफुलनेस ऑफ दिस नेगेटिव एंड द पॉजिटिव स्पेस इज बेसिकली वेरी वेरी क्रूशियल इन फॉर्म्स। तो कई बार आप देखना स्पोर्ट्स कार्स के जो एज लाइन होती है या उनकी साइड लाइंस होती है, साइड प्रोफाइल्स इसलिए ज्यादा मस्कुलर देखते हैं बिकॉज उसमें लाइट का ना एक पर्टिकुलर पैटर्न में प्ले होता है, यानी कि आई वुड से इंटरेक्शन होता है। सपोज फेरारी है तो फेरारी का वो वॉल्यूम इसलिए ऐसा एग्रेसिव दिखता है। देखो पहला तो उसको बनाया गया है, दूसरा उसमें जो लाइट का इंटरेक्शन होने वाला है, यानी कि हम विजुअली चीजों को देख कैसे रहे हैं, बिकॉज द लाइट इज कमिंग टू आवर आईज एंड दैट इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड एट आवर बैक ऑफ द रेटिना। सो बेसिकली वो चीज जो है, जो ऑब्जेक्ट है जो दूर है हमसे, उसका इंटरेक्शन हमारा विजुअल हो रहा है। एंड विजुअल में इफ वी पुट सम प्लेफुल एलिमेंट्स लाइक व्हाट वी हैव पुट इट हियर, तो किसी को इसमें टेबल जैसा कुछ दिखेगा, सम सॉर्ट ऑफ फर्नीचर, बट somebody else might look at two faces in this thing. All right. So this understanding of the visual perception. So ये इसका expansion if you look here and यहाँ पे it's about the negative space, sorry, positive space is more. बेसिकली अगर हम ब्लैक को पकड़ के चले तो वो नेगेटिव स्पेस होता है और व्हाइट जो हो गया पॉजिटिव स्पेस है, और वाइसा वर्सा ऑल्सो वी कैन गो। एंड अगर उसको हम हटा देते हैं देन इट बिकम्स समथिंग डिफरेंट, इट विजुअलाइज समथिंग डिफरेंट इसमें दिखता है। बाद में आ जाओ थोड़ा सा। ओके तो ये एक कंफ्यूजन हमारे सामने ये आई वुड से नॉट कंफ्यूजन, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई एम ज्वाइनिंग बैक। ऑलराइट, sorry somebody came, okay, so this is basically from also an important learning which is the is understanding of the negative and the positive space। सो इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं इन दिस व्हाट दे डू कि जम्बल्ड फॉर्मेट में तुमको वर्ड्स दे देंगे जो क्लियरली दिखेंगे नहीं, बट इफ यू पुट अ पीस ऑफ पेपर एंड समथिंग ब्लैक, a strip or a paper piece or some scale, then you will see that they have written a message। So probably we will see some things आगे जैसे जैसे हम स्लाइड में बढ़ते जाएंगे। So coming to very design understanding of the forms और basically design में forms कैसे relevant है। So basically देखो form को पहले थोड़ा हम एक step और आगे बढ़ के समझते हैं in sense of products। Forms are essentially 3D volumes। तो वो एक बलून भी हो सकता है, एक ट्रक भी हो सकता है, एक फर्नीचर भी हो सकता है, एक टेबल भी हो सकता है, पोर्सलिन ग्लास हो सकता है, एक ऐसा ये जो एब्स्ट्रैक्ट जैसा स्ट्रक्चर रखा है, दिस कैन बी समथिंग जिसमें आपको एक देखने में लग रहा है कि हाँ इसमें एक वॉल्यूम है और एक वेट है। सो फॉर्म्स आर एसेंशियली 3D वॉल्यूम्स दैट रिफर टू इनिशियल विजुअल परसेप्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द शेप अराउंड अस। जैसे हमने कहा कि हम चीजों को पहले विजुअली पकड़ते हैं, जैसे आपने सिलुएट के केस में, इस केस में व्हाट यू हैव सीन, और बिना देखे बहुत आसानी से आपने बता दिया ये तो एक टेबल ही होगा। अब यहाँ पे आपको वो नहीं दिखा कि इस टेबल पे एक एप्पल भी होगा, बिकॉज सिलुएट हैज कैप्चर्ड बेसिकली द एसेंस ऑफ द टेबल। बट इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं एक बल्ज दे देता, सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक स्ट्रक्चर और समथिंग, तो वो दैट कुड बी अ ट्रिगर इन व्यूअर्स माइंड कि यार कुछ तो ऑब्जेक्ट भी रखा है टेबल के ऊपर। अब वो ऑब्जेक्ट क्या रखा है, उसको आपने इंफॉर्मेशन को कितना क्लियरली वहां पे कन्वे कर रखा है। सो पंपकिन kept on a table will be very different from an apple kept on the table। और अगर इसका हम सिलेट क्रिएट करें and if person in front of you is able to recognize, then you have managed the proportions and everything very balanced way। So coming back to our understanding, अब फॉर्म्स को ब्रॉडली देखो, एक्चुअली देखो चार तरीके के फॉर्म्स होते हैं जो हम लोग कहते हैं इन डिजाइन लैंग्वेज। बट ब्रॉडली अगर हम समझने चले जो हमारे रेलेवेंट है फॉर एनआईडी दैट पॉइंट ऑफ व्यू इज organic forms and inorganic या geometric forms। So any idea what is organic and the one which is visible in front of us right now?
Is it organic or geometric? Simi, Ankit, would you like to give a try to it? सर इट्स ऑर्गेनिक। क्यों, ऐसा क्यों लगा कि ये ऑर्गेनिक है, ये ज्योमेट्रिक नहीं है क्या? या ऑर्गेनिक होता क्या है, कुछ आइडिया? सर ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो ज्यादातर हमें नेचर में से मिले। अच्छा, तो उस केस में जो कैक्टस है वो क्या हुआ? वो सर कैक्टस मतलब बहुत तरीके से वो ऑर्गेनिक ही होंगे मोरओवर। ज्योमेट्रिक तो बहुत अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट जैसे सर्कल होगा। एलोवेरा, एलोवेरा देखा है? क्या सर? एलोवेरा एज अ प्लांट, एलोवेरा, यस सर देखा है। इज इट एन ऑर्गेनिक फॉर्म और ज्योमेट्रिक फॉर्म? ऑर्गेनिक सर। ओके, ठीक है। सो एक्चुअली ना, फॉर्म्स में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, देयर आर सर्टेन एट्रीब्यूट्स on the basis of which we differentiate in the forms. All right. सो एट्रीब्यूट्स कैसे होते हैं? जैसे रिजिडिटी है, बोल्डनेस है, तो वो कैसे होगा वो हम आगे देखते हैं, आगे हम लोग शेयर करेंगे, एंड वी विल लुक एट सम वीडियोस एज वेल। तो उसके बेसिस पे बेसिकली हम जज करते हैं। एंड फॉर्म्स में क्या होता है कि हमारी आईज कैसे ट्रेवल कर रही हैं, आईज इन द सेंस आईज उस सामने वाले ऑब्जेक्ट पे मूवमेंट कैसे क्रिएट कर रहे हैं आई बॉल के थ्रू। तो दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ द फॉर्म, वेदर इट लुक्स मोर सटल और वेदर इट लुक्स मोर ज्योमेट्रिक और रिजिड। ठीक है ना? तो ब्रॉडली और एक दो तरीके के और भी होते हैं, एक और मैं बता देता हूँ, उसे एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म बोलते हैं। बट एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म का बहुत ज्यादा सेंस इसलिए नहीं बनता बिकॉज वी आर डिजाइनर्स। ये पेंटिंग में या आर्ट में ज्यादा अच्छा है बिकॉज वहां पे यू हैव फ्रीडम कि आप अपने लिए चीजें कर सकते हो। बट व्हेन वी आर इनटू डिजाइन, व्हेन वी आर डूइंग फॉर्म स्टडी और फॉर्म मैनिपुलेशन, इट इज फ्रॉम द यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सामने वाला उसको कैसे परसीव कर रहा है। Similarly, in the DAT examination, when you are, when you are appearing and when the question is put onto you, so you cannot make any shape, any volume that you like. Basically, an aspirant should make something which is relevant to the asked question. So I remember in SEED, I think 2023 or 2022, what they have asked is they have given an organic structure or building which was designed by Jaha Hadid. So that is very flowy. I would show you probably the image. And then they asked to keep taking inspiration from this building, make a sports shoe basically. इससे इंस्पिरेशन लेके और आपको शू बनाना है, नॉट स्पोर्ट शू, सम शू बनाना है, बट टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस एलिमेंट। सो उसे हम कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, दैट ऑल्सो वी विल टॉक इन द कमिंग थिंग्स। बट फॉर नाउ अंडरस्टैंड कि फॉर्म दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड ज्योमेट्रिक। ऑर्गेनिक मीन्स जो थोड़े से देखने में सटल दिखते हैं, जैसे ये सामने वाला है, एंड ज्योमेट्रिक कभी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट मी चेंज द स्लाइड। सो आई हैव ट्राइड टू पुट टू पिक्चर्स हियर। Here's an example of geometric packaging जो बहुत ज्यादा देखने में geometric स्टाइल में दिख रही है। It's more or less in the triangular format, है ना? And secondly, in this in the on the right hand side, what you can see is more organic. Organic में it has a touch of nature. It can be inspiration taken from the nature. It can be something which is more fluid or dynamic, जैसे a splash of water, पानी जमीन पे गिरा और कैसे बिखरा, which is more organic, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Geometric is little bit of rigid, tight, जिसका फील जो आ रहा है वो स्टर्डीनेस जैसा आ रहा है, बट इट मे नॉट ऑलवेज बी स्टर्डी ऑल्सो। इट अगेन डिपेंड्स ऑन द डिजाइनर एंड देयर अंडरस्टैंडिंग एंड देयर एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म। तो आर्किटेक्चर में वो फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होगी ऑटोमोटिव से। ऑलराइट। एंड सिमिलरली एक टेल्कम पाउडर में का जो पैकेजिंग होता है उसके फॉर्म की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग होगी। ये जैसे अपना ये आता है ना, ये आपने देखा होगा वो बॉटल आते हैं, ग्लिसरीन की बॉटल्स आते हैं या वैसलीन के बॉटल्स आते हैं, या बेसिकली जिसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं, तो दोज बॉटल्स आर वेरी प्लेफुल, तो वो उसको एक्चुअली फेमिनिन फॉर्म जैसा दिया जाता है। अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, रिजिडिटी एज एन एट्रीब्यूट
is more about masculinity, and flow is more around femininity. For example, I have provided here two images. यहाँ पे दो images आपके सामने हैं. One is the Cybertruck by Tesla and one is a celebrated car from the Beetle. तो दोनों में क्या फील आ रहा है? लाइक अगर मुझे पावर को शो करना है, एग्रेशन को शो करना है, तो तुम कौन सा वाला व्हीकल को अडॉप्ट करोगे? और मुझे थोड़ा सटलनेस चाहिए, मुझे कंफर्ट दिखाना है, मुझे एक लेजर दिखाना है, क्लासी दिखाना है. क्लासी हालांकि दोनों ही होते हैं अपने अपने टाइम में. तो आप क्या चूज करोगे? सो जस्ट गिव इट अ ट्राई. So what feeling does arouse when you look at the Tesla Cybertruck, and what feeling arouse when you look at the Volkswagen, this car? Just give a try. कैसा लगता है, कैसा परसेप्शन क्रिएट होता है? Simi, Ankit, are you guys हेलो। हाँ. So when you think of look at the Cybertruck, इसका फील और उस कार के फील में क्या डिफरेंस है, एंड व्हाट अबाउट सराउंडिंग, हाउ इट इज प्रेजेंटेड? सर बिकॉज ऑफ कलर्स एंड फॉर्म जो टेस्ला के दिया हुआ है कार का, उसके कलर जो है वो पत्थर से ज्यादा सिमिलर है जैसे उसमें दिखाया गया है, तो स्ट्रेंथ डिपिक्ट कर रहा हो ऐसा लग रहा है। इट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन अंकित, मैं कहूँगा बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है. क्योंकि बैकग्राउंड में इफ यू सी, तो देखो कलर के साथ वही 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 अपना नेक्स्ट पॉइंट भी यही है कि it's not only the shape, it also the color and the visual, other visual elements which we put around to make that form or to support that form or to complement that form, I would say. So it's a very good observation as you mentioned. जब आपने पत्थर को जोड़ा, और पत्थर के साथ आपके क्या फीलिंग आते हैं या कैसे कीवर्ड्स आते हैं आपके मन में? लाइक पत्थर कैन बी रिजिड, बोल्ड, हैवी. पत्थर कैन नेवर बी सॉफ्ट, मैनी स्टोन्स कैन नेवर बी सॉफ्ट. क्या कभी ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी चट्टान को देख के अरे इसको तो कितना सॉफ्ट फॉर्म है, ये प्लेफुल फॉर्म है? इट्स बोल्ड, जहां है वहां है, सालों से है. so that rigidity, so that elements have wonderfully been depicted in this image, जहां पे cyber truck is being visually compared with this stone, or I would say rock, as an element, as a background. And to complement that, they have put a red color. So red कहीं से भी एक pacifying color नहीं है, it's more aggressive. So जब हम कुछ क्रिएट करते हैं या जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट ऑलवेज फॉर्म बट ऑल्सो द कलर थ्योरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कलर थ्योरी एंड एप्लीकेशन. सो व्हेन यू सेड कि उन्होंने जो कलर को रेप्लिकेट किया है इन द बॉडी, दैट इज मोर अराउंड स्टोन. सो आपका कलर सिलेक्शन या कलर पैलेट, या आप जब अपने डिजाइन प्रपोज कर रहे होगे इन दैट एग्जामिनेशन, यू कैन पुट एंड यूज सर्टेन एलिमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट योर आइडिया. कि आप उसको कॉम्प्लीमेंट कैसे करोगे, रिजिडिटी को आप कैसे शो करोगे, है ना? सिमिलरली द बीटल, व्हाट अबाउट द बीटल, स्विमी? अंकित, इफ यू वांट टू गिव अ ट्राई. Beetle car looks more vintage and soft. सॉफ्ट मतलब वो हार्ड साइड पे नहीं जा रही है. एंड सी उसका प्रेजेंटेशन भी उन्होंने वैसे ही किया है, कलर सिलेक्शन भी वैसे ही किया है, रिजिड सा नहीं है. मैंने बोला ना, फॉर्म्स इज फर्स्ट अबाउट द विजुअल इंटरेक्शन. हमारा विजुअल इंटरेक्शन कैसा हो रहा है उसके साथ, इट्स 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 अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म्स, एंड इट इज बीइंग कॉम्प्लीमेंटेड बाय 2-3 अदर थिंग्स. कि आप बैकग्राउंड कैसा रख रहे हो, सपोर्टिंग एलिमेंट्स कैसे रख रहे हो, कलर्स को कैसे चूज कर रहे हो. ऑलराइट. So at this point, we will have a look at the video which says about the understanding of the form and design language, and which also suggests some ideas to uh, to make more effective forms. Right. I think my screen is visible. This video is the first of a Yes, sir. two-part series. Part Visible two will focus on form quality. ये वीडियो विजिबल है, ऑडियो इज क्लियर टू यू गाइस?
Yes, sir. Okay, okay. चलो ये एक बार हम देखते हैं. So it gives a very good idea about the forms and its application in industry. Follows function. And in this first part, we're going to explore the quote, form follows emotion. So form follows emotion. Basically, what that means is that people are driven and moved not just by function, but also the visceral reaction they feel when they look at a product. Now, one of the best ways to elicit emotion in your design is to use symbolism. And one of the most iconic symbols that I can think of is the human face, or loosely referencing the human face. Now, as people, we tend to see faces in inanimate objects. It's such a common phenomenon that it even has a name. It's called pareidolia. Humans just have a general tendency to anthropomorphize. And this is especially the case with cars. A car's face basically says everything you need to know about it. And it's probably the most important aesthetic feature in the design. In fact, the same part of the brain involved with facial recognition is the same one that car design experts use when they analyze cars. So, for example, the Fiat Panda looks like a friendly little bear here. Contrast this with the newer Aston Martins, which have a certain edge to them, especially when you look at them next to our friendly little panda bear here. Then contrast that with the Lamborghini, which just looks straight up angry, and you can kind of see the differences very quickly. So the Fiat Panda is all about being approachable to the mass market. The Aston Martin is all about refined performance, and the Lamborghini is all about raw, unbridled power. And you can learn these things just by looking at the design. Everything that you need to know about how the car will drive is in the way that it looks. You don't need to put abstract faces on all or even most of your designs. I'm not suggesting that. I'm just showing you that it's a commonly used symbol or icon in design. And if anything, you need to be aware of this so you don't accidentally put a weird looking face in your design. This happens way more often than anyone cares to admit, and it's just very sad. So moving on, there are other ways to elicit symbolism in even more abstract ways through the use of subtly referencing other shapes in your design. So a good example of this is Fuse Project's sail chair. The back of the chair is inspired by the Golden Gate Bridge, one of the world's most iconic pieces of architecture. Suspension bridges use thin cables to displace force and tension to the big towers here. And what's unique about suspension bridges is that they're both strong and flexible, which makes them good for withstanding movement, especially during an earthquake. Now, the flexible backing of the sail chair also moves with your body and it adds support where necessary. So, as a viewer or user, you make the subconscious association of support and structure with flexibility and comfort. And that's exactly what people are looking for in an office chair. Then it's up to you as the designer to follow up on that promise on a functional level. Another thing to think about is how form follows context or culture. So, what I'm basically saying here is that you need to understand the attitude and sentiments of your user. And a really, really good example of this is the iMac G3 from the late 90s. So this one's especially crazy when you consider what computers typically looked like at the time. They're very pedestrian, very utilitarian, overly complicated beige boxes. Now, computers hadn't fully penetrated the consumer market yet, and their design and overall user experience was pretty poor. In the late 1990s, computers were still fairly new and intimidating to a lot of people. But the colors and the bubbly form of the iMac communicated friendliness and approachability, which is exactly what this user needed to feel comfortable with the design. The fun, transparent plastic also communicates that same sort of openness. There's also a handle at the top. Now, no one's expecting you to carry your desktop computer around, but the handle encourages potentially hesitant users to grab it and interact with the computer and become acquainted with it. So everything about this design is about being playful, which is a perfect message for a computer to have for the culture and context of the late 1990s. Another one to think about is form follow surface transitions. Now, there are three main surface transitions in design, and Gray Holland, the founder at Alchemy Design, wrote a great article about this, which I'll link in the description. And I'm going to use his definitions as well. So basically, positional continuity refers to the hard edge created when two surfaces intersect. Tangential continuity is the next level, defined by a circular arc, creating a relatively smooth transition between these surfaces.
And then curvature continuity is a little bit trickier to describe, but it's basically when you can't tell when one surface ends and another begins. With tangential continuity, there is like this little tiny break in the surface, even though they are actually tangent or creating a smooth transition between the two surfaces. And this sort of stuff is especially important when you're designing form intersections. One of my first professors at CCA, named Carson Shadley, always used to say that the biggest opportunities for interesting design happen where two surfaces meet or intersect. Now, these are a few power drills here that I'm using as an example. One is using positional, another is using tangential, and the last one is using curvature continuity. Notice how dramatically the look and feel of the device changes with each change in this surface continuity. I'm not really changing the proportions or anything else about it. It's just that surface continuity that really changes the attitude. And this is kind of what Carson was talking about, especially at the surface transition here where the handle meets the main body. One thing I want to mention is that you're mostly going to be combining these surface continuity transitions. You're not going to just do positional or just do tangential. Usually it's a combination of them. So as I'm sketching up this power drill concept here, I'm kind of using all three surface continuity transitions. It's really hard for me to give you a definitive answer for what each of these transitions represent without the proper context. It's all very contextual, but basically big, rounded, blobby open shapes tend to look more friendly and approachable. Tangential intersection tends to have a certain utilitarian man-made aesthetic since it's not found anywhere in nature. And positional continuity sometimes represents danger or sometimes stark simplicity. Once again, it's really hard to give a definitive answer on what each of these means, but use that as just a very broad guideline. So I hope you enjoyed this video. Remember to smash that like button, maybe subscribe if you're into it. All right. Coming back to our presentation. So this is visible to you guys? My presentation is visible? Yes, sir. Okay, so what he talked about in this video about the positional and the tangential continuity is something more, advanced. But at this stage, what our intention is to understand how emotions are deflected out or how the usability we define on the basis of the understanding of forms. All right. जैसे आपने बोला कि साइबर ट्रक को देख के and the background and the terrain, it gives a sturdy look. And how will you feel then you come to know that this is all a cake? It is made of, chocolate and wafers inside. So, कैसा लगेगा ये जान के if I tell you कि this is an example of cake made in form of Cybertruck, can you digest it? Ankit, Sumi, I No, can tell sir. you. मतलब, or if it really is the cake, then what? How will you feel? What is that your expression? Ankit, anything you want to discuss? It will be unique, sir. A bit weird. तो बेसिकली डिजाइनर्स क्या करते हैं ऐसे कॉन्ट्राडिक्शंस का यूज करके एंड दे क्रिएट द सरप्राइज एलिमेंट्स जो देखने में सॉफ्ट दिखेगा वो पता चला कि वो पत्थर का है एंड दिस इज मोर आर्टिस्टिक वे और वे टू कैप्चर द अटेंशन एंड सपोज इफ आई हैव मेड दिस टेस्ला ट्रक फॉर्म एंड देन यू कम टू नो इट्स अ केक सो यू कैन नॉट डाइजेस्ट सो आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है कि इसके साथ हम ऐसे एक्सपेरिमेंट करें इट्स नॉट केक इट्स अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन but the thing is if you see now so many things people are experimenting with certain things जहाँ पे वो देखेगा कुछ और but actual में it is something else but otherwise जो जो पर्सन है जो उसको देख रहा है द फर्स्ट इंटरेक्शन इज द विजुअल इंटरेक्शन तो जहां पे जो दिख रहा है हम उसका मीनिंग वैसे कंक्लूड करते हैं वी आर कंक्लूडिंग दैट बीटल और दिस ग्रीन कार इज मोर ऑन द सॉफ्टर साइड एंड दिस cyber truck or the Tesla truck is on a more rigidity, more hardness. All right. So basically, ये पूरी understanding this forms is basically to trigger emotions. So as I said in NID, sorry, in the seed, they have asked a question, ki how will you make a shoe
inspired from a building which is so flowy from made from the Jaha Hadid is a architect जिसने ये बनाया था. And how will you make something which is similar to shoe or footwear which is to be worn in the in the feet. तो ये अंडरस्टैंडिंग दे वांट टू टेक फ्रॉम यू कि आप उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे. एंड दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ विजुअलाइजेशन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड देन आई वुड से ड्राइंग एप्टीट्यूड. तो ऐसे क्वेश्चंस में it's a combination of all these things. Now, since we are talking about forms are purely about the emotions. Forms are purely about the um, visual perception it it creates in front of us. And to understand the forms and emotion, let us look at the next slide, which is around characters. So characters are very significant example here. So what you can see here on the left hand side, जो देखो विलन टाइप के कैरेक्टर्स हैं जिसमें आपको रिजिडिटी चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि कार ये विलन है, बट जब हमें वैसे इमोशंस ट्रिगर कराने होते हैं, यू सी देयर आर शार्प एजेस, देयर इज मोर फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ट्रायंगल्स in mustache, in the face, in the eyebrows. It's more sharp. So basically, जब हम कांटे को देखते हैं, हम कैक्टस को देखते हैं, what type of emotion it triggers is very, very different than to a flower. So similarly, in automotive industry, in product design, they make designers stand out their products, the understanding of the form by understanding of the forms. कि आपको एक जूसर मिक्सर बनाना है and it is going to be in kitchen. So kitchen things cannot be sturdy. वो ऐसे नहीं दिखना चाहिए कि एक ब्लॉक रखा है, बट समथिंग विच इज गोइंग इन गार्डन कैन बी मोर स्टडी, कैन क्रिएट अ परसेप्शन कि आउटडोर सेटअप विच इज मोर प्रोमिनेंट लाइक एन स्टोन. बाहर तुम उन चीजों को रख सकते हो, बट किचन के अंदर ऐसी चीजें नहीं रख सकते. सिमिलरली, नाउ इन आर्किटेक्चर वी आर कमिंग अप न्यू टाइप ऑफ सर्फेसेस, न्यू टाइप ऑफ मेथड्स which we put on wall to trigger certain emotions. So ये form के understanding is everything for a designer to trigger the emotion in the viewer. And this is what these DAT exam or any examination are looking forward कि आप ये skill के साथ कैसे करते हो. How you bring out a shoe from a building with that same emotion, all right? So यहाँ पे if you see it's more triangular. But contrarily, what type of emotions are coming to you when you are looking to the figure on the right hand side, which is more, or you tell me what type of emotions are coming to your mind. Which one is more playful, but which one is more, shatir type या थोड़ा सा, I would say fearful. Which one do you think is it? Ankit, Sumi? Characters on left side looks more fearful, and on the right side it looks more Why funny and friendly. not it's uh, not very fearsome? ऐसा क्यों लग रहा है? Because of How shapes. you are concluding? कैसे दिख रहा है ऐसा? Because of shape, what you rightly said. तो अगर if you see broadly, you can see my cursor, no? इसका face is again a ball form में. Then this body is ball or volume form में, है ना? Then lower feet is also more round. So when we are making something which is more subtle, more round, it becomes more playful, jolly emotion it gives. It gives more, and also here, तो पहला तो अगर हम इसका हम सिल्हूट बनाते तो सिल्हूट से ही we can conclude कि this is more playful thing. एंड अगर इसका हम सिल्हूट बनाते, सिल्हूट मीन्स वो जो हमने स्टार्टिंग में काला वाला देखा था ना, दिस थिंग, अगर हम इसको सीधा ले और इसके आउटलाइन मार के पूरा ब्लैक कर दें, तब भी हमको समझ में आ जाएगा क्लियरली कि दिस इज सम प्लेफुल कैरेक्टर. एंड सिमिलरली इन दिस ऑन द विलन साइड जहां पे थिंग्स आर मोर ट्रायंगुलर, वी विल कंक्लूड कि दिस इज समथिंग मोर फियर्सफुल, या कुछ ऐसा जिससे डरने जैसा है. कंफर्टेबल तो आप इस फॉर्म के साथ नहीं हो सकते, इस फेस के साथ.
So this understanding, be it animation, be it product design, be it toy design, be it furniture design, this understanding of form is very, very crucial when you are appearing any of the data examination, right? कि हम चीजों को playful कैसे दिखाएं. Now, if I put a question in front of you, you have to make a toy for a kid. What are the keywords or what are the attributes which you will look onto when you are making a toy for kids? किन चीजों का आप ध्यान रखोगे? Anyone It of shouldn't have sharp edges. वो तो इसलिए भी हो गया क्योंकि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. डू इट हैव इमोशनल सेंटिमेंट और समथिंग? Bright colors. ब्राइट. And तो यू विल round shapes. राउंड शेप्स एंड ब्राइट कलर्स. क्यों ब्राइट कलर्स क्यों करेंगे? Means denoting more friendliness, means तो seriousness नहीं यहाँ होनी पे चाहिए उसमें. here I would like to little bit correct you. ऐसा नहीं है कि ये यूज नहीं होता था. What you said is right because at this age you are somewhere 17 to 18. तो तब हमारे जो खिलौने थे वो थोड़े ब्राइट साइड पे थे, थोड़े प्लेफुल फॉर्म में थे. But now you see Hamleys and all, they are coming up new type of products or new type of toys which are more subtle in the color. Subtle means not very bright color. So trends are also evolving, I would say. तो इस थोड़ा सा इस इंफॉर्मेशन को हमें अपडेट करने की जरूरत है. साथ ही साथ जो हमारे कंटेम्प्रेरी टॉयज थे, जो इंडियन टॉयज थे, दोज वर मेड फ्रॉम वुड एंड वुड इन इटसेल्फ इज अ सॉफ्टर मटेरियल. तो उसका जो फॉर्म बनाया जाता था, बी इट लाइक पीकॉक और डॉग और पैरट और सम कैरेक्टर्स, और ट्रेडिशनली जैसे चन्नापट्टम टॉयज एंड ऑल टॉयज दे मेक, द फॉर्म इज मेक इन सच अ वे एंड यू राइटली सेड वहां पे वो तब भी ब्राइट कलर्स यूज करते थे. तो उसके दो रीजन होते थे. ब्राइट कलर्स बेसिकली की अवेलेबिलिटी क्या है, कि कौन से तरह के कलर हम नेचुरली बना पाए. बिकॉज व्हेन वी आर डूइंग वुड, तो उसमें बेसिकली ये लोग लैकर का यूज करते हैं. लाख एक करके आता है जिसको हीट करने पे दे अप्लाई. सो उसमें लिमिटेड शेड्स होते थे. सो दे wanted to put the shades which are more attractive to kids. So that is again the visual perception which we are trying to achieve through forms and colors. But अभी trends थोड़े change हो रहे हैं, and I will always suggest to anyone and everyone who is looking at this video, who is going through this interaction, now see the color psychology and the color understanding. It is evolving. Now companies, now brands are focusing more on to subtleness because it gives a premium look. So that is another thing, and which actually is working in market. But what you said is also not 100% wrong. हम कलर ऐसे यूज करेंगे भाई जो बच्चा अट्रैक्ट हो. ऐसे क्यों करेंगे? ब्लैक कर देंगे तो वो बिल्कुल भी उसके साथ नहीं खेलेगा. या तो हमें कुछ कीड़े जैसा बनाना है, सम वॉर्म और समथिंग विच इज वॉबली, दैट कैन बी ब्लैक एंड ब्लू एंड सॉरी ब्लैक एंड येलो का कॉम्बिनेशन, कैटरपिलर जैसा कुछ बनाने. Sir, we can play with the material also. तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि द थिंग इज कि फॉर्म इट डज नॉट ओनली कम फ्रॉम द वॉल्यूम, इट इज ऑल्सो द मटीरियल. इट्स मैनी फैक्टर एक्चुअली. मटेरियल भी है, कलर्स भी है, लाइटिंग भी इसका एक फैक्टर है ना. शेडो भी एक फैक्टर है. अगर यही शेडो इस करेक्टर का जैसे 12 PM पे बन रहा है तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट 6 PM पे यानी कि शाम के वक्त अ लॉन्ग शेडो कैन बी कंफ्यूजिंग. वो उस टाइम पे उतना प्लेफुल नहीं दिखे क्योंकि वो बहुत इलोंगेटेड सा बनेगा, वो डिस्टॉर्टेड बनेगा. सो देयर आर मल्टीपल एलिमेंट्स व्हिच यू कैन यूज in your DAT examinations. So in this character, expressions are also important because देखो एक वो चीज बोला ना कि पहला जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो एक्सप्रेशन से भी पहले हम चीजों को सिलेट से समझते हैं. सो सपोज इफ यू आर स्टैंडिंग, मान लो तुम खड़े हो और तुम हंस रहे हो बहुत इन अ जॉली मूड हो, बट आई एम लुकिंग एट यू फ्रॉम द बैक. सो अगर मैं तुमको पीछे से देख रहा हूं तो हाउ विल आई डिफरेंशिएट यू अमंग मेनी अदर पीपल? अरे ये तो फलाना ही बंदा है, या तो ये वो है, मैंने इसको कहीं देखा है. बिकॉज हाउ आई एम परसीविंग योर सिलुएट फर्स्ट, and then comes the additional layer of informations, which is emotions, which is face, which is type of accessories you have worn.
तो ये सेकेंडरी आता है, बट प्राइमरी सिलट आता है, यानी कि वो फॉर्म आता है। एंड इफ आई इवन मेक इट स्माइल, देखो स्माइल तो ये भी कर रहा है, जो ये करेक्टर है यहाँ पे हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, दैट आई एम होवरिंग ओवर माउस। इस स्माइल और इस स्माइल में भी अंतर है। इफ नहीं, यू लुक एट हाँ, यस सर, इट इज अ बिट सस्पिशियस, सस्पिशियस, नॉट अ प्योर स्माइल। यहाँ पे the element are more triangular and here the element overall form is more circular, round, golu golu. So that is something, and this is also used by spies, यानी जो जासूस होते हैं, as a disguise, because we perceive the things by the visual interaction. Then you later come to know. Okay, so this I am talking about in context of emotions. Now, when I show you something like this, do this laptop charger looks playful to you? And contrary, do this toy train, which is made from more round and wooden blocks, do it look more serious to you? ऐसा क्या है? Basically is the forms के understanding. So what you see here in that toy train is more rounded forms. गोल गोल चीजें हैं, गोल एलिमेंट्स हैं, and which are more organic and convey softness and approachability. Approachability means welcoming है, क्योंकि ये toy है ना, they are inviting you. On the contrary, this charger, यहाँ ये लैपटॉप का चार्जर बना है, क्या हम लैपटॉप के चार्जर को कहीं सजा के रखते हैं? क्या हम लैपटॉप के चार्जर को कभी प्रेफरेंस भी देते हैं? वो कहीं लटका रहता है, किसी कोने में पड़ा रहता है, बिकॉज द वे इट हैज बीन डिजाइंड इज फॉर अ वेरी डिफरेंट पर्पस। बट देन आई वुड से कि जो चीज अभी तक यूजलेस है, या जो सिर्फ एक अपेंडेज है, लटकन है, जरूरी नहीं है, डिजाइनर बीइंग डिजाइनर यू कैन ऑलवेज मेक थिंग्स ब्यूटीफुल, मोर अपीलिंग। सो अब इसी को अगर मैं येलो कलर से मार्क कर दूं और कुछ अच्छे ग्राफिक्स डाल दूं, देन इट बिकम्स मोर अपीलिंग। Otherwise, you guys know how chargers are treated. They are treated like till nobody pays the attention, till your computer don't get charged or your mobile don't get charged. जब कुछ गड़बड़ाता है तभी हमारा attention, it seeks our attention. All right. And so in this case, it is more sturdy, hard-edged, bold line, and geometric shape, which conveys a sturdiness, rigidity, and aggressive emotion. Contrary in toys, या हमारे जो ये वुडन टॉयज कंटेम्परेटेड, जस्ट मोर राउंडेड ऑर्गेनिक फॉर्म्स। सो ये अंडरस्टैंडिंग को ऑलवेज एनीवन हु इज लुकिंग एट दिस वीडियो, प्लीज कीप इट विद यू। तो जब आप एग्जाम में इसका आंसर कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हो जहां पे उन्होंने फॉर्म्स के अंडरस्टैंडिंग को आपसे मांगा हुआ है, कीप दिस 2-3 थिंग्स टुगेदर इन माइंड एंड रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंगली। This will help you, convey better. It is not only in this thing, this is also in the digital art or the visual elements put in digital media. अच्छा, which of these poster, यहाँ पे दो posters के sample हैं, which of them feels more serious and which one feels more playful or jolly? The book on the right side seems more serious. Which says art exhibition. Right side one. Right side means Bauhaus जहाँ पे लिखा हुआ है, and the visual elements they have selected are more geometric. देखो सिर्फ ब्लॉक जैसे शेप में है। Contrary, if you look at on the left hand side, it is more playful or some craft or some sort of exhibition. All right. So this is how we make an understanding of the forms come into practical life and into application when we are answering question for that. So take this understanding, physical attributes, take this understanding of emotions while you are designing, while you are giving the proposed solution to your client or in your examinations. इन चीजों का ध्यान रखो, ठीक है? And so that's all from my side. And if you have any queries, please reach out to us at liveclasses@entrance360.com. Or you can ask me here also, or you can put it in the comment box if you are reaching me out at the YouTube also. So Simi and Ankit, any question, anything you want to ask from me? No, No, sir. sir.